अग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः
अंबर भी तू ही है धरा। ओ हुआ पार तेरे नाम से, तू नाम के परे मिला। चल भी तू अचल भी तू, अंबर भी तू ही है धरा। मृत्यु का रहस्य तू, हर सांस का तू देवता। सब लोग तुझ में है बसे, कण कण में तू ही है बसा। संहार में रुद्र है सृष्टि का भी मूल तू, संहार में रुद्र है सृष्टि का भी मूल तू। हर रूप में अरूप तू बसा। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे। तू बने, रुद्र अवतार में अधर्म नाश तो करे। देवी संग तू प्रीत है, ऋषियों की तू प्रेरणा। गणों के संग तू झूमता, हर ले सबकी वेदना। काशी में गृहस्थ तू, केदार में तू जोगी है। काशी में गृहस्थ तू, केदार में तू जोगी है। हर रूप में अरूप तू बसा। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे। हे शिवाय शंकराय, हे महेश मुक्तिदाय, हे ईशान हे त्रिकाल हे दयानिधे। We now present a special collaboration of musicians who are from different traditions and musical genres. They are musicians by profession, but devotees at heart. Today they will offer a special devotional tribute. Let us welcome on stage Mangli Kutle Khan, Ananya Chakrabarti, Nihar Shembekar and Meenal Jain with Sounds of Isha as they present Sounds of Soil. Sadhguru, thank you for what you're doing. Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation. Could I ask for the Muslim World League? We are completely ready to help you. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. It is implementable, and we will see a distinct change in the coming few years. The movement that you are taken up as a soil scientist, I could not expect any more God's blessing than that. You've inspired me to think about soil very differently.
I request all of you to come together and join the Conscious Planet movement to save soil. Our soil needs nourishing. Save soil. Let us make it happen. Save soil. Let's make it happen. My full support of what is needed from the Palestinian side. You honor the people of this country. I want to thank you very much. सदगुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. सदानंदहर उंच डोंगरी गडावरी येळकोट येळकोट जय जेजुरीच्या खंडेराया सागराला या वाईच्या तू गणराया सागराला या पसरणीच्या भैरी देवा सागराला या भैरी देवा सागराला या जेजुर गडावाचे चौघडावाचे चौघडा पुण धरती ही पलीकड गड जेजुरी अलीकड रूप दाऊन बानू गेली स्वारी देवाची येडी झाली रूप दाऊन बानू गेली स्वारी देवाची येडी झाली अव बानूबाईचं याड लागलं मल्हारी देव मल्हारी बानूबाईचं येड लागलं मल्हारी देव मल्हारी अव इसरून गेलाय कुण्या गावाला भंडारी देव भंडारी इसरून गेलाय कुण्या गावाला भंडारी देव भंडारी अव येळकोट बोलती होय नित काय भंडारा उधळती होय येळकोट बोलती होय नित काय भंडारा उधळती 9 लाख पायरी गडाला हो चिरा जोडीला खडकाला 9 लाख पायरी गडाला हो चिरा जोडीला खडकाला बोला हो तुम्ही बोला बोला हो तुम्ही बोला म्हाळसा नारीला भंडारा वाहू देवाला हो मल्हारी रायाला भंडारा वाहू देवाला हो मल्हारी रायाला हो मल्हारी मल्हारी माझा कैवारी देव मल्हारी 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 माझा कैवारी देव मल्हारी गळा घाली तो भंडारी देव भंडारी गळा घाली तो भंडारी देव भंडारी मल्हारी मार्कंड
बानू नवरी नटली. काही मंडळी मजा करताय का? Are you guys having fun? Okay, so we have to like stay awake the whole night. आपल्याला पूर्ण रात्र जागा राहायचंय. So let's get the energy up. When I say येळकोट येळकोट, all of you say जय मल्हार. Okay? Shall we do this? Okay. 1, 2, 3, 4. येळकोट येळकोट. Once more. येळकोट येळकोट. क्या बात है शंभो. ओ खंडेरायाच्या लग्नाला बानू नवरी नटली. नवरी नटली. कालबाई सुपारी फुटली. कालबाई सुपारी फुटली. आओ नवरी नटली. कालबाई सुपारी फुटली. नवरी नटली. कालबाई सुपारी फुटली. सगळे एकत्र गाऊया. खंडेरायाच्या लग्नाला हो आलवर हाडी कोण कोण. आलवर हाडी कोण कोण. आलवर हाडी कोण कोण. संगे पार्वती घेऊन आले शंकर भगवान. आले शंकर भगवान. आले शंकर भगवान. 33 कोटी देवांची इथे गर्दी दाटली. ऍक्च्युली आज आपली सगळ्यांची गर्दी दाटली आहे. सो 5 लाख भक्तांची येथे गर्दी दाटली. 5 लाख भक्तांची येथे गर्दी दाटली. नवरी नटली. कालबाई सुपारी फुटली. 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 जोरिया
खैर मंगा, नित खैर मंगा, हो नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। हो नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। तेरे पैरां च, तेरे पैरां च, तेरे पैरां च अखीरों में मेरी, तेरे पैरां च अखीरों में मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। हो नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। हो नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। आप सबकी तालियां हो जाए, बीमारी है तो मिटती है। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता तू ही यो है मेरा मुर्शिद सोना, तू ही यो है मेरा मुर्शिद सोना। मेरे साईया मेरे सतगुरु, मेरे साईया मेरे साईया, मेरे साईया मेरे सतगुरु, मेरे साईया मेरे साईया, मेरे साईया मेरे सतगुरु, मेरे साईया मेरे साईया, मेरे साईया मेरे सतगुरु, मेरे साईया मेरे साईया। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा वे। खुशी ये होई मैनू, खुशी ये होई मैनू, खुशी ये होई मैनू सजना बतेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। तेरे प्यार दिता नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। हो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, राजा बालमं साहेबो झिरमर 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 अंधारी ओ बिजली चमके, रात अंधारे ओ बिजली चमके, पिया पिनिया में नहीं नींद
मालव जी मारा चिर मर बरस मेवरी मालव जी मारा चिर मर बरस मालव जी मारा चिर मर बरस जवने रो वो कह गया रे अवने जवने रो कह गया रे कर गया कवले हने कर गया हने ओ गिणता कस गई रे गिणता कस गई रे ओ गिणता कस गई रे गिणता कस साहिब जी मारा चिर मर बरस मेवरी मालव जी मारा चिर मर बरस मेवरी मालव जी मारा चिर मर बरस चिर मर बरस ओ प्राण पाखी मो उइरा जा खाचा थिके पीरित बरो বড় জ্বালা ও প্রাণ পাখি মোর উইরা যা चल जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चल हाय रे कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चल हाय रे उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे
जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে 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 करे खिले सारे भेद जाए दीवारे प्रेम कोई सींध लागे लागे रे लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले जिया नहीं गेंद लागे लागे रे लागे माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे के देखे न भाले न जाने न दाए रे দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে 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 ও প্রাণ পাখি মরুই রাজা খাঁচা থেকে পীড়িত বড়
లింగ భైరవమ్మను గెలిచిండు దేవాది దేవుళ్ళ ఆది దేవుడు దేవాది దేవుళ్ళ ఆది దేవుడు పార్వతమ్మ పొందగోరిన ప్రియుడు డంగురు 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 మా శివ వయ్యారి మా శివ డంగురు మా డంగురు 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 మా శివ వయ్యారి మా శివ డంగురు మా ఓం నమః శివ ఓంకార మా శివ శంకర గౌరీ వంకసుడు మా ఓం నమః శివ ఓంకార మా శివ శంకర గౌరీ వంకసుడు మా డంగురు 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 మా శివ వయ్యారి మా శివ డంగురు మా డంగురు డంగురు
भाग उदय कर दीना, सतगुरु दर्शन दीना, मारा भाग उदय कर दीना। मारो कर्म भरम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे, मारा कर्म भरम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु, हमारा सतगुरु, हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। दास नारायण जस गावे, चरणों में शीश झुकावे, दास नारायण जस गावे, चरणों में शीश झुकावे। मारो बेड़ो पार लगायो, मैं वारी जाऊं रे, मारो बेड़ो पार लगायो, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं When someone is affected with cancer, there is a lot of anxiety and fear within them. Some of them have to undergo chemotherapy, which causes a lot of side effects, the most important being getting tired very easily. Shambhavi Mahamudra is a powerful process that approaches the inner core of the individual in a scientific manner. There is ample evidence that yoga has immense benefits. So doing the inner engineering program helps to reduce the levels of tiredness, and also the stress levels significantly come down, which plays a huge role in the healing of the body, mind and soul of that patient. Sadhguru's social media platforms offer eye-opening insights on various aspects of life, and his profound wisdom has transformed millions of lives around the world. It's given me much more clarity. I was able to connect science with mysticism. Discover the timeless wisdom of a realized master and embark on a journey of self-transformation. Consecrated by Sadhguru, Linga Bhairavi is an exuberant expression of the divine feminine. Powerful rituals and offerings at Linga Bhairavi assist people in every step of their life, from birth to death. These offerings create an opportunity for one to receive Devi's abundant grace and realize their full potential. You can register at lingabhairavi.org/arpanam to make these offerings online. Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, it offers programs to learn powerful chants, music, Bharatnatyam and Kalaripayattu. Conducted by the rigorously trained students and alumni of Isha Samskriti, the art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation.
body, mind, energy should become your tools, that you can use them effectively. Once you put in a certain amount of sadhana, then you see suddenly your body and mind behaves and it works for you. No matter what life throws at you, you will see that nothing really knocks you off, doesn't matter what. When we say Shiva exists in Kailash, his work, his knowing, everything that he knew, he stored it in this place. It is the greatest mystical library on the planet. If one has the necessary ability to access, everything that you wish to know about the existence is right there. I don't think you can ever remain the same after going through this experience. For a spiritual seeker, there's really no better place to go. I did inner engineer 2016-17. Being a sports person is mind over matter for us. You need to learn to control yourself, control your mind, save your energy, which is with Shambhavi and inner engineering, where it teaches you to conserve and generate energy and ride when it's required, when you are on a match day. Go out and show what you're capable of. One big movement that's happening right now is the Farmers Producer Organization movement. Today we are managing 25 farmer producer organizations. In the next year or maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. This can be scaled up into a massive possibility. A Farmer Producer Organization, or FPO, is a company formed by farmers. With Isha's support, 25 FPOs are being established in Tamil Nadu and Karnataka to bring economic well-being to 25,000 farmers. Farmers are being trained under Isha's guidance to become entrepreneurs, which will enable them to lead and manage large FPOs. These FPOs will help raise farmers' income and productivity. Money from the sale is deposited in our bank account. It is that easy. Today, when we market our produce, we receive a good response. Many doors are opening for us. This is because of the trust and goodwill people have for Isha. Now we feel excited about agriculture. Ladies and gentlemen, as you continue to enjoy the Mahashivratri celebrations, a word of caution to please take care of your belongings and any small children that you have with you. Each year, ladies and gentlemen, as we add more elements to the celebrations, may I also remind you that Sadhguru's discourse is coming up, so you need to stay awake and keep your spine erect during the meditation. We would like to welcome into our midst a few honored guests who join us today, and we'd like to do so by offering them flowers. We'll begin with the Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Government of India, Shri Arjun Ram Meghwal. We also have the Minister of Education, Puducherry, with us, Thiru Namasivayam. The Member of Parliament, Telangana State, Shri Santosh Kumar. The Member of Parliament from Kollar, Shri Muniswamy. The President of the BJP of Tamil Nadu Chapter, Thiru Annamalai. The National General Secretary of the BJP, Shri C.T. Ravi. And the Member of Parliament from Theni constituency, Thiru Ravindranath. The members of the Veliangiri Uravan Farmer Producer Organization are going to join Sadhguru to make an offering of fruits and to seek his blessings now.
the Veliangiri Uravan Farmer Producer Organization. The members will now make an offering of fruits to Sadhguru and seek his blessings. And as a token of gratitude, the farmers will offer Sadhguru the National Best Emerging FPO Award, which they received recently. Isha's Farmer Producer Organization initiative aims to transform the Indian farmer's life from distress, debt traps, and desperation to one of happiness, prosperity, and sustainability. The Veliangiri Uravan Producer Company began its operations under Isha Outreach's guidance in November 2013 with over 1,000 farmers and has experienced rapid growth with its turnover multiplying more than 3,000 times to reach over 66 crore rupees. Based on this success, Isha Outreach has been accredited as a cluster-based business organization by the Government of India. As part of this initiative, 23 new FPOs have been formed, which will be supported by Isha Outreach over the next 5 years through business planning, structuring, recruitment, and other core activities to ensure sustainability and profitability. You can see the award being presented to Sadhguru, the National Best Emerging FPO Award, which they received recently. And we hope that this will be taken forward and replicated in more parts of the country. Ladies and gentlemen, we now draw your attention to the indigenous bulls that you can see in the plaza in their majestic glory, led by the beautiful Kala. May I request you all to please give them a rousing welcome. Our beautiful indigenous bulls. In the pastoral culture of Tamil Nadu, bulls and cows play an integral part of people's livelihood. The Tamil people have a deep reverence and intimate relationship with them. And far from being pets, these glorious animals are active working members of the family in agricultural societies. And they are crucial for providing us sustenance, preserving our ecology, and of course, saving soil. Up on stage, we're happy to present to you Kala, the resident bull of Isha Yoga Center. All the bulls at the Isha Yoga Center are native Indian breeds. This is part of a significant effort to preserve these native breeds, which are facing unprecedented decline. A round of applause for our majestic Kala.
year, millions of devotees participate in the night-long Mahashivratri celebrations at the Isha Yoga Center in person as well as online. Creating a conducive atmosphere for offering a powerful spiritual possibility on such a large scale requires enormous effort and resources. We invite you to contribute towards Maha Annadanam, the sacred offering of food to the devotees, and also towards other arrangements to help devotees experience this sacred night of Shiva, the Adiyogi. Know the joy of fulfillment by contributing towards the spiritual well-being of humanity. सदगुरु जी अपने सेव सॉइल कैंपेन के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड बाइक राइड जा रहे थे, तो थ्रू धारावी उनको पास करके आना था, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिला था कि सदगुरु जी को वेलकम करने का। तो मैं मेरे क्रूमेट्स ने परफॉर्म किए थे, तो उनकी एनर्जी देखे तो हम फुल चार्ज हो गए थे। यही एक चीज़ है, एक पर्टिकुलर रीज़न है जो मुझे भी इंस्पायर किया कि इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए हमें भी, कि हमें भी इतना ही एनर्जेटिक और इतना ही पॉजिटिव वाइब दुनिया को देना चाहिए। क्योंकि कोई एक जैसे डेली रूटीन पे रहते हैं, उठते सुबह उठते काम पे जाते, काम से आते सोते फिर वापस, मतलब एक साइकिल था अपना। इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद मैं खुद पे फोकस करने लगा। इट इज़ अ प्राइसलेस कोर्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अ ग्रेट ह्यूमन जो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स है और तुम्हें भी पॉजिटिव वाइब से भरा देते हैं। Sadhguru Exclusive is a unique video streaming platform with the largest catalogue of authentic mysticism. Explore the mystical Kailash and Mansarovar, powerful consecrations by Sadhguru, dream yantra, chakras, enlightenment, death and much more. These materials are things we have spoken in close groups. They are very potent stuff beyond what is generally offered to the public. Register now to get access to unreleased videos. Sadhguru has opened up several possibilities for one to experience and become receptive to Adiyogi's grace. As part of this, tonight, Sadhguru will consecrate over 5 million Rudraksh beads in the presence of Adiyogi and the Yogeshwara Linga. These Rudraksh beads will be distributed across the world as Rudraksh Diksha, along with other consecrated prasadam, which would be immensely supportive for one's spiritual sadhana. Wearing a consecrated Rudraksh bead is supportive for physical and mental balance. It also assists one in meditation, cleanses the aura, and shields one against negative energy. The Rudraksha Diksha is offered free of cost, and to receive it, please register at isha.co/RD. If you are in India, you can also give a missed call on 8300 83000 to receive the registration link via SMS. The Rudraksh beads that are consecrated by Sadhguru on this auspicious night of Mahashivratri will reach your homes free of cost if you have successfully registered to receive them. You can also register to gift Rudraksha Diksha to your family and friends. We hope that you can make use of this offering for your own well-being and of your loved ones. संसार सहोद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां विपत्यताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां दत्ताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्य मूकाश्च वाचा
काञ्चनाभीष्टतीव्रताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याद्रिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमादमाङ्ग्री स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजदारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां कृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां
पदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज शशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां
Brahma padaviya nalle, Vishnu padaviya nalle nalle, Rudra padaviya nalle, Nanumattava padaviya nullanayya. Nanumattava padaviya nollanayya. Kudala sanghama deva, Kudala sanghama deva. Say this after me. Yoga yoga yogeshwaraya, Bhuta bhuta bhuteshwaraya, Kala kala kaleshwaraya, Shiva Shiva Sarveshwaraya, Shambho Shambho Mahadevaya. Namaskaram to every one of you, all of you who are here, and those of you who are watching this from your homes, from different parts of the world. Namaskaram to every one of you. Mahashivratri 2023. Why is this so important? One thing that we need to understand is Mahashivratri is not only a religious festival. It could have become that over a period of time. But essentially, it is an event celebrated based on the planetary positions and also the astronomical positions that our planet and solar system takes on this particular day, and creates a situation where there is a natural upsurge of energy. For this, or to make use of this, the simple requirement is you should keep your spine erect, vertical, I mean, not horizontal, vertical, stay awake. And if you can also be focused towards your inner well-being, you could immensely benefit. And above all, being here at the foothills of Velangiri, the most important thing is we are here at 11 degrees latitude. This upsurge is at its highest at 11 degrees latitude in the northern hemisphere, and we are sitting right on it right now.
So, this is of immense benefit. When energies are naturally trying to go this way, if you are this way, that is not the best thing to do. In your home, if there are sleeping people, wake them up at least at this time, and it will make a lot of difference. Oh, I slept through every Mahashivratri, nothing happened to me. That's exactly what I'm saying, nothing happened to you. Because in our lives, loss does not mean we have to lose something. Loss of potential is also a terrible loss. And unfortunately, this is a very big loss that's happening to humanity for various reasons, because our survival process in the modern world is getting so complicated. It engages you for an entire life, 365 days, just to make arrangements for your shelter, food, family, and the needs keep going up endlessly. Because of this, entire life is invested in survival process. One important thing about Mahashivratri is, this is also an effort to cross the instinct of survival and touch the other dimension within you, which is always longing to expand. The two most significant milestones of survival process in our experience of life is food and sleep. When the stomach goes on fire, you must eat. Whatever, whether you want it or not, this goes down, so you must go down. These are the two basic survival processes, food and sleep. So on this day, you are also not supposed to eat, but I'm not being so hard on you, but at least the sleep, if you transcend that, in many ways, the fundamental instinct of survival will be transcended. So I stayed awake till 12 o'clock, well, that you did with the night show also, that's not the big deal. You must stay awake beyond the Brahma Muhurtam, that's 3:40, until the sunrise, because in this, one thing is you're keeping your spine erect, make use of the upsurge. Another is you're making an effort to cross the boundaries of instinct of survival and arrive at that aspect of being human which wants to expand limitlessly. If that has to be fulfilled, first and foremost thing is, you don't have to give up food and sleep, but they should not be compulsive factors in your life. Today is a good day to try this, that sleep is not a compulsive factor, we stay awake. மகாசிவராத்திரி 2023 இந்த நிகழ்வை இங்கே நேரடியாகவும் நேரலையாகவும் உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து பார்த்திருக்கும் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த மகாசிவராத்திரி ஏன் முக்கியமானது என்றால், இது சமயம் சார்ந்த விழா மட்டுமல்ல. இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் கோள்களினுடைய நிலைப்பாடுகள், வானியலினுடைய தன்மைகள் ஆகியவையெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பாகவே அவனுடைய சக்தி மேல் நோக்கி செல்வதற்கு சாதகமான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றன. எனவே இன்று தேவைப்படக்கூடிய மிக குறைந்த நிபந்தனை என்னவென்றால், உங்கள் முதுகுத்தண்டை நிமிர்ந்த நிலையிலே வைத்திருக்க வேண்டும். உள்நிலை விழிப்புணர்வு பற்றியும் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். இன்று குறிப்பாக இந்த வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரத்திலே நாம் இருக்கிறோம். வடபுலத்தில் மிகச்சரியாக 11 டிகிரி சாய் கோணத்திலே நாம் இருக்கிறோம். எனவே இது கூடுதல் பயன் தரக்கூடிய ஒரு அம்சம். இப்பொழுது நீங்கள் வீட்டில் இருந்து நேரலையில் பார்ப்பீர்களேயானால், வீட்டில் யாராவது தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் அவர்களை எழுப்பி விடுங்கள். இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தருணமாக அவர்களுக்கு அமையக்கூடும். சில பேர் சொல்வார்கள், நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாக மகா சிவராத்திரியில் தூங்கிக் கொண்டு தானே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லையே என்பார்கள். உண்மைதான், உங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை. எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கவில்லை. ஏனென்று சொன்னால்,
இருக்கின்ற ஒன்றை இழப்பதற்கு மட்டும் இழப்பு என்று பெயரல்ல, எது செய்யக்கூடிய சாத்தியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதோ அந்த சாத்தியத்தையும் நீங்கள் கைவிடுவீர்களேயானால் அதுவும் ஒரு இழப்பாகவே கருதப்படும். இன்றைய நவீன உலகத்தில் 365 நாட்களும் உணவு தேடுவதற்காகவும் குடும்பத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காகவுமே போய்விடுகின்றது. இன்றைய மகாசிவராத்திரியின் இன்னொரு முக்கியத்துவம் உணவு சார்ந்த உந்துதல்களை கடந்து விரிவடைய வேண்டும் என்கிற உங்கள் உள்நிலை பரிமாணத்தை தூண்டுவதற்கு இது சரியான நாள் ஆகும். எனவே இன்று பொதுவாக உண்ணவும் மாட்டார்கள், உறங்கவும் மாட்டார்கள். நான் உங்களிடம் அவ்வளவு கடுமையாக நடந்து கொள்ளவில்லை. உங்களுக்கு உணவு தரப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் உறக்கம் என்கிற உந்துதலை நீங்கள் தாண்டுவீர்களேயானால் அது உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை தரும். இன்று நள்ளிரவு தியானம் வரை மட்டுமல்ல, பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்திலும் சூரியோதய நேரம் வரையிலும் நீங்கள் விழித்திருப்பது அவசியம். இதன் மூலமாக சக்தி நிலை மேலெழும்புவதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் என்பது முதல் விஷயம். இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால், உங்களுக்குள் இருக்கும் குறுகிய எல்லைகளை, சில உந்துதல்களை கடந்து விரிவடைய வேண்டும் என்கிற உள்நிலை விருப்பத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுகிறீர்கள். எப்படி தமிழன தெம்பா தூக்கமா? ஒன்றும் கேட்கல எனக்கு. The first ray of sun, it should be every day, at least today. The next morning, the first ray of sun should fall on you, not on some insect or worm or bird or animal. You should be the first one to catch the first rays of sun. Why I'm saying this is, just now, an hour ago, somebody was asking me, Sadhguru, you eat very little, but you're so energetic and on all the time, how is this? So I was trying to explain. Let me tell you this. On an average, for most human beings, nearly 60 to 70% of the energy that they exhibit in their life comes from the food that they eat. Only 30 to 40% is from sunlight, water and the air that they breathe. If you can easily reverse this proportion, that only 30 to 40% of your energy comes from the food that you eat, rest comes from sunlight, water and air. If you just do this, food and sleep is not a problem in your life. They come when they come. These are two things that never come on time for me and many of us here. Food and sleep comes when it comes. Well, somebody will tell you, if you don't every day eat on the dot, you will not be healthy. Well, we are healthy. If you are so concerned about health, that itself is a sickness. But there is sickness in the world, especially last 3 years. There has been pandemic. Well, many of us have lost so many people who are dear to us. Almost every one of us have lost somebody. It was an unfortunate happening, but at the same time, it is important to know a respiratory infection like that need not have taken such a large toll of millions of people if only if we had made ourselves little more resilient, little more in tune with nature. If we had done this, we would not… it would still happen probably, but it would not have been such a big tragedy. Definitely I can say this, by looking at the people in the ashram, we have not lost a single person to COVID. We have also been active. I have travelled around the world in these 3 years, mixing with millions of people. I have not had a cold or a fever in these last 3 years. This is not magic. This is proper management of life. நாளை மட்டுமல்ல, இனி எல்லா நாட்களிலும் சூரியனுடைய முதல் கதிர் உங்கள் மேல் விழ வேண்டும். ஏதோ ஒரு புழு பூச்சியின் மேல் விடுவதற்கு பதிலாக உங்கள் மேல் விழ வேண்டும். என்னிடம் சிலர் கேட்கிறார்கள், சத்குரு, நீங்கள் மிகவும் குறைவாக உண்கிறீர்கள், ஆனால் எப்போதும் சக்தியோடு இருக்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள்.
பொதுவாக மனிதர்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்றால், அவருடைய சக்தியில் 60% முதல் 70% வரை அவர்கள் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டின் மூலம் வருகிறது. 30லிருந்து 40% தான் சூரிய வெளிச்சம், தண்ணீர், காற்று போன்றவற்றிலிருந்து வருகிறது. உண்மையில் இது தலைகீழாக மாற வேண்டும். உங்கள் சக்தியில் 30லிருந்து 40% தான் உணவிலிருந்து வர வேண்டும். மீதமுள்ள 60-70% உங்களுடைய சூரிய வெளிச்சம், தண்ணீர், காற்று ஆகியவற்றிலிருந்து வர வேண்டும். இதை செய்து பாருங்கள். உணவு, உறக்கம் போன்றவையெல்லாம் பெரிய நிர்பந்தங்கள் அல்ல. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டாக வேண்டும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். அது அப்படி அல்ல. ஆரோக்கியத்தை பற்றி நீங்கள் எப்போதும் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தால் அதுவே ஒரு நோயாக மாறிவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. கடந்த 3 ஆண்டு காலங்களில் பெருந்தொற்று காலம், நாம் அனைவருமே ஏறக்குறைய எல்லோருமே யாரேனும் நெருக்கமான ஒருவரையாவது இழந்திருக்கிறோம். இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. ஆனால் நுரையீரல் தொற்று என்பது இவ்வளவு லட்சம் பேர்களை மரணமடை செய்ய வேண்டியதில்லை. உள்ளபடியே இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையும் ஓரளவு எதிர்ப்பு சக்தியும் இருந்திருந்தால் இது நிகழ்ந்திருக்காது. இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை பார்க்கிற போது இது எனக்கு தெரிய வருகிறது. ஏனென்றால் இந்த பெருந்தொற்றில் ஆசிரமத்தில் ஒருவரை கூட நாம் இழக்கவில்லை. நான் இந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளவோ பயணம் செய்து லட்சக்கணக்கானவர்களோடு நெருங்கி பழகினேன். இந்த 3 ஆண்டுகளில் எனக்கு ஜலதோஷமோ காய்ச்சலோ வந்ததே இல்லை. எனவே உள்நிலை எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தி இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மேற்கொள்வதென்பது மிகவும் அவசியமானது. Why are we talking about the pandemic and illnesses? Mahashivratri we are just supposed to celebrate. But to celebrate you need health. To celebrate you need well-being. To celebrate you need a vibrant body, a joyful mind and a heart full of love. Otherwise, your celebrations mostly end up only in drunkenness because inside there is no celebration, you have to put things from outside. Let me tell you this, there are a lot of young people at the back. This will be interesting for them. Are they there? Is there anybody young? Oh. Right now in the world, there is a wave of going towards intoxicants in a big way. Many nations unable to control the drug addictions, they are making it legal not because it's good for you, simply because anyway they're not controlling it, so they thought they will make money out of it by taxing it. So this is how it works. But for the individual, what does it do? Let me tell you this. Those of you who are in search of some kind of intoxicant, let me tell you this. In the last few years, our center in Harvard Medical School, run by some of the very acclaimed scientists, both in Harvard Medical School, Beth Israel Hospital and Indiana University, Rutgers University and University of California, many scientists here together they worked. And what they found was that the largest unbiased gene expression research over 2 years revealed this. That is, there is a 3-fold increase in BDNF. This means brain-derived neurotropic factors. These decide your capability of decision-making, how stable you are in your mind, how exuberant you are in your experience of life, and 70% increase in endocannabinoid production in the body. Cannabinoid means, for those of you who don't understand the word,
I'm telling you of marijuana, self-made marijuana in the body. You are generating endocannabinoids over 70%, and anandamide is over 70%. Just for you to understand, to give you a context, this is much higher than what happens during a sexual orgasm. That is how it is for 3 months of practice of Shambhavi. And you remaining blissful is just a natural consequence of that. Instead of bringing yogic practices to the world, the governments around the world are going about legalizing marijuana, legalizing cocaine, legalizing things, when the greatest chemical factory is right here and you can manufacture what you want if you have little control over it without any negative impacts. And your ability to function in the world will be greatly enhanced if you take the same thing from outside. It will deplete your ability to act in the world. It will deplete your capabilities and competence. But if it comes from within, it is greatly enhanced. You see, Adiyogi, always drunk, not from outside. You look at me, always stoned, not from outside, but from within. Today we have laboratory proof. Oh, if it happens in India, of course it may not be true, but it's coming from Harvard Medical School. The only thing that you value. But it's coming from the right place, I'm glad it's coming from the right place, and significant reduction in stress levels and anxiety levels, even for people who are going through traumatic experiences after being in war zones. It has worked miraculously well for them. All these studies will be published in the coming few months. Why I'm talking about this right now is, if we don't act now, World Health Organization is predicting a mental health pandemic. We don't want to go there. I want to live with healthy and joyful people, not people who have lost their balance. Hello, all of you. If you're mad with joy, if you're mad with love, it's okay with me. You're just mad, that's not okay. Anna? மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டம் என்கிற நிலையில் நாம் ஏன் பெருந்தொற்று பற்றி பேசினோம் என்றால், கொண்டாடுவதற்கு சக்தி வேண்டும், உடலிலே வலிமை வேண்டும், மகிழ்ச்சியான மனம் வேண்டும், அன்பான உள்ளம் வேண்டும். பல பேரும் போதை என்பது வெளியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான செய்தியாக இருக்கக்கூடும். தனி மனிதர்கள் போதையை தேடி போகிற போது சில நாடுகள் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றன, அவற்றை சட்டபூர்வமாக்குகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தின் மையத்திலும் சரி, நம்முடைய மையத்தோடு சேர்ந்து பல விஞ்ஞானிகள் பெத் இஸ்ரேல், இந்தியானா, கலிஃபோர்னியா போன்ற பல்கலைக்கழகங்களோடு இணைந்து சில பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். அந்த பயிற்சியில் சில பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. மரபணுக்கள் எப்படி தங்கள் தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன என்பது சார்ந்த இந்த ஆராய்ச்சியில் 3/4 பங்கு மூளையினால் தூண்டப்படக்கூடிய நரம்பியல் அம்சங்கள் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்திருக்கின்றனர். வாழ்க்கையில் நீங்கள் முடிவெடுப்பது, உறுதியோடு இருப்பது, வாழ்க்கை அனுபவங்களை மேற்கொள்வது போன்றவற்றுக்கெல்லாம் உரிய ரசாயனங்கள் உடலிலேயே சுரக்கின்றன. 70% அளவு உடலிலேயே அவை உருவாகின்றன. ஒரு 3 மாத காலம் ஷாம்பவி பயிற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு இத்தகைய நிலை உருவாகிறது என்பது இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக கண்டறியப்படுகிறது. எனவே போதையை கட்டுப்படுத்த முடியாத சில அரசாங்கங்கள் அவற்றை சட்டபூர்வமாக ஆக்குவதற்கு பதிலாக உலகெங்கும் இந்த யோகாவை கொண்டு சென்றால் அவர்களுக்குள்ளேயே அந்த ஆனந்தத்தன்மை சுரக்கும் என்பதில் ஐயம் கிடையாது. ஒரு ரசாயன உற்பத்தி என்பது உள்ளுக்குள்ளேயே நடக்கும்போது வெளியிலிருந்து அதை உட்கொள்வதற்கான தேவையில்லை. இந்த ஷாம்பவி பயிற்சி மேற்கொள்ளுகிற போது செயல்திறன் மேம்படுகிறது. வெளியிலிருந்து போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளுகிற போது
செயல்திறன் மிகவும் குறைகிறது. யோகா என்பது உள்நிலையில் ஆனந்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. அதனால்தான் ஆதியோகி எப்போதும் ஆனந்தத்திலேயே இருக்கிறார். என்னை பாருங்கள், நான் எப்போதும் ஒரு பரவசத்திலேயே இருக்கிறேன். அது உள்நிலையிலேயே உருவாகக்கூடிய ஒன்று. இதை ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பரிசோதனை கூடம் சொல்கிறது என்றால் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள். அவர்களுடைய அளவுகோலின்படி இந்த பயிற்சியினால் மன அழுத்தம், பதட்டம் ஆகியவை பெருமளவு குறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக போர் எல்லைகளில் நிற்பவர்களுக்கு கூட அழுத்தமும் பதட்டமும் இந்த பயிற்சி செய்வதால் குறைகிறது என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் இந்த ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. மனநிலையிலான பெருந்தொற்று வருவதை பற்றி விஞ்ஞானிகள் பேசுகிறார்கள். நான் ஆரோக்கியமும் சமநிலையும் உள்ள மனிதர்களோடு வாழ விரும்புகிறேன். நீங்கள் அன்பின் காரணமாக உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை, ஆனந்தத்தின் காரணமாக உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை. வெறும் உன்மத்தம் என்பது ஆபத்தானது, அது ஆரோக்கியம் அற்றது. Many studies across the world, what they are saying is sounds very dangerous. Just 2 days ago, the CDC in United States is saying, among the teenage girls, 1 in 3 girls are depressive right now in America, according to their study. 1 in 3, 33% of the young girls are depressive. A teenage person means this is an exuberant part of life where you must be bursting with life. Well, generally, how we have known them is when they're at that age, without any reason they can laugh and giggle, but now they're getting depressive. That is a bad sign for humanity. This is being said by most top authorities in the world. This is not to be taken lightly, and as a part of this, we will be starting a global movement in the coming year. This is important. This is not a moment like Save Soil that we go place to place and try to impress governments. This is about the people. This is about… people means, am I talking to you? Hello? Are you depressing? Show me some life, come on. So, this is very important that every one of you, many of you have been through an engineering process and keeping up the practice, but there is a part of you who will do it once in… only on the full moon nights, and some others only on Mahashivratri, and you know, like that. So this is something we want to bring to the world, that at least 2 billion people on the planet must be able to close their eyes for 12 to 15 minutes a day and do a simple process to turn inward, either a chant or a meditative process or a kriya or even classical music or dance, something which will turn them inward. If we don't do this, we will be living in a world… if 1 in 3 are going to go off their mind, they are going to be in our homes, they are going to be in your families. And having people like that is neither a pleasure for them, nor is it a pleasure for you, because handling a mentally unstable person is a terrible challenge. This is something that you don't wish on anybody. Definitely it should not happen in your families. So this is important that we understand, as we do things for physical well-being,